Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad again with the chapter number 6 of your geography. And the chapter is called as you all know about, that is your manufacturing industry. And today we are going to start with the topic that is agro-based industries, in which I would like to take your cotton, jute and sugar industry, which are totally based on agriculture to get its raw material. Fine students, this is the chapter number 6 of your manufacturing industry of your geography. Fine students, so let's we talk with the first one, and this is about your textile industry. Children, agro-based industries, as we all know about, that the raw material industries, it utilizes its raw material by providing, which are provided by the Indian farmers, you can say, and these are called as agro-based industries. It means those industries which are based to get, it means to get their raw material from the agriculture is called as agro-based industries. For example, if you are talking about the jute, sugar and cotton. So for in this particular topic, I would like to get through with the important areas of your important features of your cotton textile, then jute industry and sugar industry, which are agriculture based industries. Fine. So let's we have the first one, and this is your textile industry. Children, India is quite famous from its ancient era to medieval and medieval to colonial period in terms of textile production, right? And India's strategic position in the Asian subcontinent ultimately leads towards to fulfill the demands of Southwest Asian countries, Egypt and European in this, especially in the Middle Ages, for exporting the textile, or you can say textile products like muslin, the calico, the puffats, which are India's products which are totally based on the fine quality. Fine. So India's position in terms of it is quite very important at that time, and India was leading in terms of exporting all these materials, especially the textile industry. तो जो भारत की आज की जो कंडीशन है बेटा, वो सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो की कंडीशन नहीं है. इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल कह लो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ होल, इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड इंडस्ट्री और वन ऑफ द प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंशिएंट, medieval as well as in the colonial period. हाँ, हम ये मान सकते हैं कि colonial period में जो perspective था वो change हुआ because of colonial power, that is from the side of Britishers. उन्होंने Indian cotton industry को और Indian mill को उन्होंने कहीं ना कहीं उनके production को hamper किया, और जिसके पीछे का रीज़न ये था कि वो अपने मिल्स को, अपने इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश करना चाहते थे. तो लेटर ऑन ये एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट था, हिस्टोरिकल यू कैन से एक सिनेरियो था. जस्ट अ स्मॉल नॉलेज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल पर्सपेक्टिव. सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है चिल्ड्रन. इंडस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज employs, it is one of the largest in terms of employing the industrial workforce. अगर क्वेश्चन आता है which industry employs the largest number of labor, your answer is textile industry, children. So industrial workforce है 4% of GDP. Industrial production, that is जो industrial workforce है that is 20%. जो इसका contribution in terms of GDP है, that is gross domestic production, this is your 4%. And in terms of industrial production, it contributes in 14%. It means a very good amount of you can say contribution from the side of this textile industry. Therefore children, the textile industry is called as one of the India's largest India's largest industry in terms of gaining the foreign revenue as well as gaining the domestic revenue. Is that clear? And
of course, as I've already told you, that foreign exchange value that it is earning, it's quite impressive in terms of 20% to 25%. So all these data should be known to you. And specifically this is a very very important data that sometimes आपके बोर्ड एग्जाम्स पे 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, या 3 मार्क्स क्वेश्चन में इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी contribution, in terms of generating the foreign revenue. Fine students, then we are then we have to talk on the textile industry in terms of its you can say, just we have to look after what type of the industry it is. Children, this industry is self reliant and it is complete in its value chain. It means that it starts from the raw material and it completes in its फिनिश गुड्स. ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से को रिलेट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर रॉ फाइबर है, दैट इज़ फॉर द फाइबर प्रोडक्शन है, तो इट इज़ रिलेटेड विद द स्पिनिंग, दैन स्पिनिंग विच गेट द yarn, then it comes to weaving knitting, it gives to your fabric, dyeing and fishing, dyeing and finishing, it gives to garment and manufacturing, and ultimately it is completed with the garments which are given, or you can say which are provided to the consumer. Fine students, तो अगर हम ये बात करें कि ये जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, दिस इंडस्ट्री completes in its chain value. It means this is self-reliant industry, that is from raw material in its highest value added products to ready-made, that is your ready-made garments and other finished good, that is products, and ultimately every department, you can say every small industry is dependent on the other one. For example, the fiber production is then spinning, then weaving, knitting, then dyeing and finishing, and ultimately the garment manufacture. So all these are complete in its value chain. Therefore this industry is self-reliant and one of the largest in terms of labor, you can say. It provided the employment to its you can say people. Fine students, we have to go through with the cotton textile. Fine, cotton textile, as I have already told you about that in earlier times in India, or you can say historical past, if we see India's the weaver, it means Indian जो बुनकर होते थे, they produce the fine quality with the help of the hand spinning and you can say the looms. पहले ये क्या था, जो इंडिया की बुनकरों की कंडीशन थी वो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर बात करेंगे कि वहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम नहीं था, ये एट डोमेस्टिक लेवल पे इसका काम चलता था. But it was a quality that is produced by the hand spinning and the looms. Basically after the industrial revolution, पावर लूम्स इस जब मशीनें आने लगी, emergence of the machines, you can say emergence of the factory system, ultimately it leads towards power looms and machines. When it introduced, it gives a setback to this indigenous textile industry in terms of that thousands of weavers were out of their work. And why? Because the mill made clothes from England was cheaper and better. It was cheaper and better than the you can say the Indian weavers cloth made by the Indian weavers. Fine, so it was a very bad condition. वहाँ से जो इंडियन वेवर्स की थी वो कंडीशन कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई. तो हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो भी आई उसका सीधा सेटबैक, जो चाहे वो फार्मर्स के लिए था चाहे वो वीवर्स के लिए था, इट वाज नॉट पॉजिटिव. और यही कारण था जो इकोनॉमिक, जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, इट वाज वेरी वेरी पैथेटिक. स्टूडेंट्स, इंडियाज़ if your 1 marks question, very important 1 marks question is there, that India's first successful modern
cotton textile was set up in Mumbai during the period of 1854, and who were the Parsi entrepreneur. Fine. बेटा स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20th सेंचुरी और 2 वर्ल्ड वॉर, अल्टीमेटली इसने भारत की कॉटन इंडस्ट्री को बूस्टअप किया, एंड इट इंक्रीजेज ड्यू टू दिस इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया. आप लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से, या आपने 4th चैप्टर में पढ़ा किस तरीके से भारत का जो कॉटन इंडस्ट्री था उसको या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1st एंड 2nd वर्ल्ड वॉर भारत की इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाइक मिली थी. स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल 1600 कॉटन्स एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल मिल्स हैं भारत में, एंड मोर देन 80% ऑफ जो टेक्सटाइल मिल्स हैं these are private sectors. It means not under the guidance of the government, and rest जो है वो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास है, जैसे यूपी हैंडलूम है, केरला हैंडलूम है, या फिर वो पब्लिक सेक्टर्स के पास है, बट दे आर वेरी लेस. फाइन. एंड स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके इस टॉपिक का क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो मैं आपको फोकस कर रही हूँ. जो 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है वो इस चैप्टर का है. दैट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री जो भारत की है, कॉटन टेक्सटाइल largest organized modern industry of India is usually it is located in Maharashtra, in Gujarat and Tamil Nadu. Fine. Question आता है, what are the factors behind the contribution, you can say what are the factors behind the success of textile mills or cotton mills in these areas? It means located in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu region. Why is it so? Your answers usually 5 marks का आता है बेटा, 3 to 5 marks का, 1 marks का नहीं आएगा. अगेन मैं बता रही हूँ, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके फर्दर टॉपिक से भी मैं आपको बता रही हूँ. ये आप मार्क कर लीजिए दैट दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत सिंपल आंसर्स हैं. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन दीज एरियाज ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल. एज यू ऑल नो दैट ब्लैक सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट, रिगर सॉइल कहलाता है कॉटन सॉइल, तो विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. सो एक अगर हम कहें फेवरेबल है क्लाइमेटिक कंडीशन में, जोग्राफिकल कंडीशन, फर्स्ट इज़ योर सॉइल एंड अवेलेबिलिटी, एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ देयर. Availability of, you can say, the transportation system, availability of local nationwide market, international markets are, क्योंकि अगर हम देखें ये सारे के सारे कोस्टल लाइन्स हैं, और इन्हीं कोस्टल से वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स या यूएसए कॉन्टिनेंट्स जाया जा सकता है. फाइन. देन नेक्स्ट इज द क्लाइमेट, द ह्यूमिड क्लाइमेट, बिकॉज इट aided the weaving, but today high-tech environment is ultimately the factors that has lost its significance here. Children, the most important is the good transportation system required over here, both the rail, road as well as the sea. Sea के तो हम export quality के लिए करेंगे for the export purpose, but हाँ, for road and rail network ultimately it combined with accessibility to the ports basically. कौन से ports बेटा? मुंबई, चेन्नई, that is कोची, सूरत and कांडला. Then skilled and unskilled laborers are present over there, and supply of electricity, it means infrastructure facilities are good over here. The tertiary sector, that is your banking and credit facilities are provided over here. Is that clear, children? So this is all about the cotton textile industry. Children, इस क्वेश्चंस में, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स से जुड़े भी होते हैं, जैसे कि ये इंडस्ट्री किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है. स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्री आपको जनरेट करता है इन टर्म्स ऑफ वन, जैसे मैंने पहले ही कहा दैट इट इज़
employed, it gives employment to the large number of people in terms of like starting from growing of cotton to picking of cotton to ginning, then spinning, weaving, then bleaching, dyeing, designing, tailoring, fine packaging. Ultimately it means that ये जितने भी areas हैं which are required numerous और ample of workforce there, तो हम कह सकते हैं कि employment generating industry है ये. Other industries are dependent on textile industry beta for their development. For example, chemical and dyeing industry, that printing equipments are there, tailoring, even though the stitching needles जो मशीन है, स्टिचिंग मशीन्स होती है, नीडल्स होते हैं, सीजर होता है, पिन होता है, ये सारे के सारे आपके इस इंडस्ट्री पे डिपेंड होते हैं. तो अल्टीमेटली दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द अदर इंडस्ट्री फॉर इट्स सर्वाइवल. स्टूडेंट्स, जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग ऑफ हाई क्वालिटी यार्न is in a mill sector which are centralized sector located mainly in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. Maharashtra, Gujarat regions are having these sorts of high quality yarn spinning mill sectors over there. Weaving जो है, it is decentralized sectors. Weaving is important and it is in decentralized, विकेंद्रीकरण है इसका, because simple children, it is correlate with the traditional and it is correlate with the western designs. Fine. So it provides the scope to incorporate the traditional skills, designs of weaving in cotton, zari is there, embroidery is there. So ultimately it is decentralized. हम ये नहीं कहते कि हम वीविंग को उठाया और हमने एक जगह पे दे दिया, हमने डिज़ाइन है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जिसमें वी नीड एम्पल ऑफ डिज़ाइंस, वी नीड एम्पल ऑफ स्टिचिंग. इज़ दैट क्लियर? क्वालिटी ऑफ वीविंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन इट्स टर्म, बट अनफॉर्चुनेट है बेटा कि भारत की जो क्वालिटी है ऑफ वीविंग इट इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास in the decentralized sector, क्योंकि somewhere somehow कहीं ना कहीं lapses in terms of technology. तो इसका सीधा सीधा setback किसको लगता है? वो setback होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. Students, decentralized sectors, it's quite very important. The rural life itself, आज भी रूरल इंडिया में जो वीविंग सेक्टर है, it is quite decentralized over there. It provides large scale of employment there. Gandhiji, therefore, he emphasized on the growth of handspun yarn and khadi. Why? Because to encourage power loom and handloom sector for their employment potential. And cotton mills are also located in various other states in India. Students, ये question आ सकता है that why Gandhiji has emphasized on the growth of handspun yarn and khadi during the national movement. इंडिया को सेल्फ रिलायंट, इंडियंस को सेल्फ रिलायंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यू हैव लर्नड. सो नंबर ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो लोकेटिंग देयर कॉटन. हर स्टेट का अपना अपना एक कहते हैं ना खादी ग्राम उद्योग, ये खादी का अपना अपना स्टॉल्स होते हैं, अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने हैंडलूम्स होते हैं बेटा. इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है हाई क्वालिटी ऑफ यार्न टू जापान है एंड UK, USA, रशिया, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट. स्टूडेंट्स, this is very unfortunate that India's position in terms of largest capacity in terms of spindle producing is 25. Second largest capacity of spindle, we are producing 25% of world's high quality of yarn after China. But again, जैसे मैंने पहले कहा, it is unfortunate, but trading in garments is only 4% of world total. It means भारत का 4% है
गारमेंट इंडस्ट्री में इंडिया की ट्रेडिंग व्यापार जो बनी हुई है टोटल, लेकिन बच्चों भारत का जो यान है दैट इज़ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यहीं पे हम लोग चूक जाते हैं। भारत का कच्चा माल हर किसी को पसंद है, लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री में भारत का कंट्रीब्यूशन इज़ जस्ट 4%। वाई? स्टूडेंट्स, export of quality yarn, we are not able to use weaving and knitting much except supplied from the fragmented smaller units, and the laborers are not so skilled here. Technologies are not so vast over here, especially the you can say the high tech environment which is quite needed over here. ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेटबैक है। इंडियन गवर्नमेंट को भी और जो ओनर्स हैं या दोज हु आर रिलेटेड विद दिस इंडस्ट्री, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ गारमेंट को वर्ल्ड मार्केट में और ज़्यादा बेहतर बना सके। इट मीन्स दैट द रिसर्च शुड बी देयर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट rather than exporting the raw material. Why we are not using the raw material for our own purpose? हम उसको बाहर क्यों भेज रहे हैं, हम उसको घर में ही क्यों ना बनाए? But because of the lackness in terms of lapses in terms of your, you can say in terms of machineries or you can say technology, भारत यहीं पे चूकता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या हम कहें चैलेंजेस की, तो बेटा एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट यही है कि रॉ मटेरियल को हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट सो साउंड ओवर देयर, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ पावर इज़ देयर, मशीन्स जो हैं वही पुराने तरीके से इस्तेमाल की जा रही है ना, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन है वो लूज़ हो जाता है, कम होता है, not up to the mark. Then unskilled laborers over there, a stiff competition with the synthetic, है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉटन, कभी कभी हम खुद एज अ टीचर हमें ऐसा लगता है कि कॉटन इज़ क्वाइट, ये बड़ा ही टफ होता है इसको हैंडल करना। सो इसके अगेंस्ट में अगर इसके कॉम्पिटिटिव है ये टुवर्ड्स द सिंथेटिक, तो सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इसको काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स, इट reduces, or you can say these are the factors that result the loss of the mills over here. And potential, India is having a good potential in terms of its production, but unfortunately not so good in terms of the export of you can say the garments. Students, present competitive scenario here, it's required the total upgradation, how we can save the challenge, how we can face the challenges, how we can save our industries especially. इसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा मिल्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स को, खासकर टेक्नोलॉजी को। वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बेटा, फिनिश प्रोडक्ट्स पे हमें काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास बेटा। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जूट और शुगर मिल के बारे में बताने जा रही हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस slide only, this presentation only. Final student, this topic only. Thank you children.